नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कंसिडर करते हैं, दैट इज डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिफरेंट ईयर्स। प्रीवियस प्रॉब्लम्स मैंने जितनी भी कंसिडर किए, वेदर इट इज सिंपल इंटरेस्ट और इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पर मेरे पास में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट था फॉर द फिक्स्ड ईयर्स। ऑल्दो आई हैव कैलकुलेटेड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो डिफरेंट सिनेरियो था, बट मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज फिक्स्ड फॉर ईच एंड एवरी ईयर। यहां पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स कंसिडर करूंगा जहां पर माय रेट ऑफ इंटरेस्ट changes with the number of the years, means as you can see it is different rate of interest for the different years। कुछ पीरियड के लिए कुछ रेट वो स्पेसिफाई कर सकता है, फॉर अदर पीरियड ही कैन स्पेसिफाई अदर रेट्स। कंसिडर करते हैं, समझते हैं इसे एक सेट ऑफ प्रॉब्लम से। he says that the rate of interest for first 2 years is 3% per annum। next he says for the next 3 years it is 8% per annum, and for the period beyond 5 years it is 10% per annum। He says that the total interest received by the person is rupees 1520 as the simple interest for 6 years। What is the principal amount he deposited? समझते हैं पहले को क्वेश्चन को। What he says that the rate of the interest for the first 2 years is 3% per annum। पहले 2 साल के लिए मेरे पास में rate of interest कितना है? It is 3% per annum। So for first 2 years, the rate of interest that is R is equal to 3% per annum। Next he says that for the next 3 years it is 8% per annum। So I'm considering for next 3 years the R is defined as equal to 8% per annum। Then he says for the period beyond 5 years it is 10% per annum। पहले 2 साल के लिए 3% है per annum, नेक्स्ट 3 साल के लिए 8% per annum, मींस ये पहले 5 साल के लिए उसने डिफाइन कर दिया है। For the period beyond 5 years, इन 5 साल से अगर एक्स्ट्रा ईयर्स में कंसिडर करता हूं, what will be the rate of the interest? It will be 10% per annum। So I can say that for period beyond 5 years, rate of interest R will be equal to 10% per annum। Next what he says that the total interest received by the person is rupees 1520 as the simple interest for the 6 years। टोटल जो रेट ऑफ उसे जो टोटल इंटरेस्ट उसको रियलाइज हुआ है, द टोटल इंटरेस्ट व्हिच इज एक्रूड एट द एंड ऑफ द 6 इयर्स, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज इक्वल टू 1520 रुपीस। व्हाट ही इज आस्किंग मी व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड, मींस ही इज आस्किंग मी द वैल्यू ऑफ द पी। तो कंसीडर करते हैं इस प्रॉब्लम को, फर्स्ट कंसीडरिंग द कन्वेंशनल अप्रोच और द ट्रेडिशनल अप्रोच, वेयर विल बी यूजिंग द स्ट्रेट अवे डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूं फॉर्मूला, आई विल बी यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, where the terms P, R, T have their meanings, means P is the principal, R is the rate of interest and T is my time period। अगर मैं बात करता हूं for first 2 years की अगर मैं बात करता हूं, what will be the simple interest? Let us consider the simple interest for the first 2 years is denoted as SI1। so मेरे पास में P कितना होगा? P is my amount deposited, rate of interest is 3%, time is 2 years upon 100, so this will be 6P upon 100। बात करता हूं फॉर नेक्स्ट 3 years, सो इट विल बी SI2 P into rate of interest, it is 8% per annum, time period is 3 years divided by 100, so it will be 24P upon 100। अगर बात करता हूं फॉर द सिंपल इंटरेस्ट दैट इज फॉर द 6th ईयर, तो उसको मैं डिनोट करता हूं SI3 के लिए, पहले 2 साल के लिए, नेक्स्ट 3 साल के लिए मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, मींस मैं पहले टोटल 5 साल की कैलकुलेशंस कर चुका हूं। नाउ आई नीड टू डू द कैलकुलेशन फॉर द 6th ईयर। उसके लिए मेरे पास में रेट ऑफ प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ईयर मेरे पास में 1 साल है, डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी 10P अपॉन 100। What will be the total interest? It will be SI1 plus SI2 plus SI3, so the value will be equivalent to, so it comes out to be 6P upon 100 plus 24P upon 100 plus 10P upon 100, और उसकी वैल्यू मुझे स्पेशली गिवन है, इट हैज बीन गिवन टू मी एज rupees 1520, so this will is equal to 1520। you can easily solve this equation to find the value of the P। this is 30P upon 100 is equal to 1520, this gets cancelled out, or you can say that the value of the, this is 1520, 30, this is 40P, this is 40P, so this will be 4 ones are 4 3s are 12, 4 8s are 4 8s are 32, so that the value of the P is equal to rupees 3800।
So you can see that the principal amount that is deposited is equal to rupees 3800. So this was the conventional approach जहां पर आपने equations form की and you have finally calculated the value of the principal amount. Now let us consider the same problem by the use of the smart approach where we'll be calculating the effective rate of the interest in case of the simple interest. We have already seen how we calculate the effective rate of the interest in case of the compound interest. Now let us see how we calculate the effective rate of the interest in case of the simple interest. I know that कि simple interest की value हर साल मेरे पास में same रहती है. Simple interest मेरे पास में same रहता है. Why? Because the principal in each of the case remains the same. मैं जैसे जैसे subsequent years consider करता हूँ मेरे पास में जो base होती है interest calculate करने के लिए my principal that remains the same. जो originally मैंने consider किया था first year में वही मैं consider करूंगा second year में, वही consider करूंगा third year में and so on. So my simple interest for each year remains the same. अगर मैं बात करता हूँ एक साल की, what will be my simple interest rate? That is R percentage, and you can say that it will be, अगर मैं amount की बात करता हूँ it will be R percentage of P. So this will be R percentage of P. 2 साल की बात करता हूँ total 2 years की, तो वो क्या हो जाएगा 2R percentage. 3 साल की बात करता हूँ 3R percentage. 4 साल की बात करता हूँ तो 4R percentage. वो मैं कब करता हूँ? जब मेरे पास में हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है R percentage. यहां पर मेरे पास में क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चेंजिंग. मींस अगर मेरे पास में n years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है तो I'll say that it will be n1 years के लिए अगर रेट ऑफ द इंटरेस्ट मेरे पास में R1% है तो वो मेरे पास में क्या n1 R1. नेक्स्ट अगर n2 years के लिए मेरे पास में R2% है तो वो हो जाएगा n2 R2. नेक्स्ट मेरे पास में n3 years के लिए अगर R3% है तो इट विल बी n3 R3 एंड सो ऑन. दिस विल गो सो ऑन. So this will be giving you the effective rate of interest in case of the simple interest. तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये प्रॉब्लम देखते हैं. He says that the rate of the interest for the first 2 years is 3% per annum. पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3% पर annum. पहले मतलब 3% is for per annum. तो 1 साल के लिए अगर 3% है और 2 साल के लिए ऐसा चलने वाला है तो इफेक्टिव रेट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी 6%. नेक्स्ट मेरे पास में क्या है? फॉर नेक्स्ट 3 years इट इज 8% पर एनम. नेक्स्ट 3 साल के लिए वो कितना रहने वाला है? इट इज रिमेनिंग एट 8% पर एनम. 8% पर एनम है और ऐसा 3 साल के लिए होने वाला है तो इफेक्टिव रेट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 24% प्लस 24%. ये पहले 2 साल के कैलकुलेशंस थी, ये अगले 3 साल के लिए कैलकुलेशंस थी. मींस पहले 5 साल के लिए कैलकुलेशंस मैं कर चुका हूं. नेक्स्ट छठे साल के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी है तो उसने मुझे स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट गिवन है दैट इज फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years इट इज 10%. मींस अगर मैं 6 ईयर में एंटर कर रहा हूं व्हाट विल बी माय रेट ऑफ द इंटरेस्ट? इट विल बी 10%. सो इट विल बी 10%. दैट इज फॉर द 6th year. This is for 3 years, this is for 2 years and 10% is for my 6th year. बेसिकली मैंने क्या किया? यही फॉर्मूला यूज किया. n1 r1 plus n2 r2 plus n3 r3 and so on. n1 कितना है मेरे पास में? The value of the n1 is 2 and the value of r1 is 3. So that gives you 6%. n2 की वैल्यू कितनी है? n2 is 3 and r2 is 8. So that gives you multiplication as equal to 24. अगर n3 की बात करता हूं that is only 1 because 6th year मतलब सिर्फ एक ईयर की बात कर रहा हूं. Value of r3 is equal to 10%. तो यहां वैल्यू पुट कर दिया है 1 into 10 is 10. So what will be your effective rate of the interest for the first 6 years? That will be 6% plus 24% plus 10% which is equivalent to 40%. तो टोटल परसेंटेज मेरे पास में क्या है? 40%. So I can say that for 6 years my effective rate of the interest is 40%. और वो 40% क्या है? That is my simple interest और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? That has been given as 1520. So 40% is equivalent to amount of rupees 1520. और अगर मैं 100% देखता हूं तो वो 100% क्या होगा? That will be my principal amount. So 100% amount, 100% will be equivalent to 100 into 1520 divided by 40. All I have done is just the cross multiplication. So this value comes out equal to, this will be same as 3800. So again you get the same answer as you have calculated using the linear approach, जिसमें आपने steps form किए, हर ईयर के लिए आपने calculation की using the formula, then finally add कर दिया to get your principal. यहाँ आपको basically क्या करना था? You have just need to calculate the effective rate of interest. उसके basis पे आपने ये calculation की. So this shows that how much time you have saved. You have saved a lot of time and this will be very helpful by solving a lot of questions in the competitive exams.